स्टार्ट। तो अब हम प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस करते हैं, AP, GP, HP। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि देयर इज अ ट्री विच ग्रोज 5 सेंटीमीटर लेस each year than the previous year. It is also given that the first year growth equals to half a meter. Question is, what is the height of tree when it stops growing? ठीक है, तो हाफ मीटर हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया। पहले साल में इसका ग्रोथ था 50 सेंटीमीटर, तो दूसरे साल में कम हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम चलते जाए तो T10 पे हमारा 5 सेंटीमीटर आएगा और T11 पे 0 सेंटीमीटर, ग्रोथ ही नहीं होगी ऑन द 11th ईयर। तो हमको टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल हाइट इन सब का समेशन होगा। तो बेसिकली इट विल बी S10 विच इज, यहाँ पे हमारे पास 10 टर्म्स है, n/2, 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म 50 + 5, 50 + 5, so we get 5 into 55 which is 275 centimeter, 2.75 meter is the answer। ठीक है, another question। हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है AP के। AP वी हैव वन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके हमारे पास 3 टर्म्स है और उन टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो x के टर्म्स में और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 टर्म्स है वो है log base 10 2 log base 10 2 to the power x minus 1 and log base 10 2 to the power x plus 3। ठीक है, तो हमें गिवन है कि ये तीनों टर्म्स AP में। तो AP का वो क्या होता है फॉर्मूला, 2 into the middle term equal to the rest sum of the first and the third term। So basically 2 into log base 10 2 to the power x minus 1 equals to log base 10 2 plus log base 10 2 to the power x plus 3। Considering the properties of log and removing the log, we get 2 to the power x minus 1 whole square. This is equals to 2 into 2 to the power x plus 3। Now suppose 2 to the power x equals to y. So we get y minus 1 whole square, that is y square minus 2y plus 1. This is equals to 2y plus 3. So we get y square minus 4y minus 2 sorry, this will be 6, so this will be minus 5, this is equals to 0। so we get y minus 1 y plus 1 y minus 5, this is equals to 0। therefore we get y equal to 1 or y equal to 5, y equal to minus 1 or y equal to 5, 2 to the power x equals to minus 1 or 2 to the power x equals to 5। Now obviously we will discard this result because something to the power something can never be negative unless and until it is imaginary, and of course x is real जो given है। So we get x as x equals to log 5 base 2। okay, these were the questions for the progressions। next we will do some questions on probability। First question is that we have 6 students
in a dorm with 6 beds arranged in a row. We have two particular students who don't want beds next to each other. How many possible ways are there to arrange them? Okay, so let's call these two specific students as A and B, and the rest 4, let's say C1, C2, C3, C4. Now we see that if we arrange these 4, we have 1, 2, 3, 4, 5 places in which we can put these both, and their beds will not be next to each other. So of course we can arrange these 4 in the ways of 4 factorial, that is 24, and then we can arrange 2 guys in 5 gaps in 5p2 ways, that is 5 factorial by 3 factorial, that is 5 into 4, which gives us 20. So the total number of ways is just the multiplication of this, that is 24 into 20 is the answer. Okay. Now moving on to the next question. It is given that we have a multiple choice question type test, and it has 5 questions, each with 3 options, out of which only one is correct. The question asked is, if a student guesses all of the questions, what is the probability that he will get 4 or more correct? So we will do this using the help of permutation and combination. जैसे कि हमारे पास 3 ऑप्शन है जिनमें से ओनली एक करेक्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रॉन्ग आंसर विल बी 2/3. तो हमें 4 और मोर करेक्ट चाहिए, मतलब इधर 4 सही होंगे, एक गलत होगा, या फिर 5 सही होंगे. तो उन 4 को सिलेक्ट करने के हमारे पास 5C4 वेज है, और उसमें हमें 4 सही चाहिए और एक गलत चाहिए. या तो हमें 5 के 5 सही चाहिए, so this is basically the answer. If we expand this, we get 10 divided by 3 to the power 5 plus 1 by 3 to the power 5, that is 11 divided by 3 to the power 5. ठीक है. Moving on to the next question. We are given that P of A union B whole complement is 1/6. P of A intersection B, this is equals to 1/4, and P of A complement is 1/4. Now we have to find out A और B कैसे इवेंट्स है. ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा, जिसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, जैसे कि A और B इक्वली लाइकली हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एंड सो ऑन. तो लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट ऑफ ऑल P A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1/4 है, so we obviously get PA equals to 3/4. Now हमारे पास PA union B whole complement है, so we get PA union B, this will be a 5/6, implies PA plus PB minus PA intersection B. PA हमारे पास 3/4 है, plus PB minus PA intersection B, that is 1/4. This is 5/6, so we get PB, this is equals to ये half, 5/6 minus half, 3/6, that is 2/6. This is equals to 1/3.
तो हमारे पास दोनों पी और पी बी की वैल्यूज आ गई। पी ए 3/4 है और पी बी 1/3 है। सो ऑब्वियसली पी ए और पी बी इक्वली लाइकली नहीं है। नाउ टू टेस्ट फॉर द अदर कंडीशंस, इंडिपेंडेंट का वो फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए इंटू पी बी, दिस विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो वी सी दैट 3/4 इंटू 1/3 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 आता है, एंड दैट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ कंक्लूसिव निकले ही नहीं, तो इसमें नन ऑफ दी अबव आंसर करने में हेजिटेट मत करिएगा। ठीक है, अगला हम स्टैटिस्टिक्स पे करेंगे।